I think we're ready to start. Is that good? Okay. Okay, all right. Yeah. Yeah. Good. No. I'll just give a brief introduction about the topic and you, and then I'll hand it over to you. Sure. Please go ahead. Okay. Good morning, everyone, and thank you so much for joining our session this Saturday morning. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ कैंसर. हम में से हर किसी के कोई न कोई नियर एंड डियर वंस we would have lost because of cancer, or they might be suffering from cancer at this point in time. And at that point in time, we generally feel, is there anything that we could have done? हम क्या उसको mitigate कर सकते थे? And why do we think like that? Because most of the time, disease जब detect होता है, most of the time India में अभी तक late stage detection होता है. Detection के बाद में progression बहुत fast होता है. The treatment is super expensive, and cancer is the second biggest killer in India after heart attack. In fact, एक recent study ये भी बताता है कि India is the cancer capital of the world. Or if it is not, it will become. The study also says that 1 in every 9 Indians will be exposed to cancer at some time in their life. So with that kind of chronic prediction, should we not do something about it? And is there something that can be done? And when we spoke to experts, we realized that yes, something can be done. Then why are we not doing it? And we can only do if we are aware about it. So with that intent, we are hosting today's session. And our speaker today is Rhythm Chordia. She is a chronic illness nutritionist specializing in ASD, ADHD, hyperactivity, Down syndrome, cancer, and CP in both kids and adults. Rhythm, by qualification, Rhythm is a graduate in food science and nutrition from India. She has also done masters in food technology from Cardiff University in UK, and she has been practicing with integrative doctors, therapists, scientists based in India, Dubai, US, and Canada. And more importantly, okay, that's her qualification. But the most important thing, she believes that food is our medicine. I'm sure, most of us have talked about or heard about functional food. And she's a strong believer in that. She's practicing that through her practice by name Buzz Healthify. And so she is here to tell us, how do we understand our relationship with what is there on our plate. हम कैसे जाने? So with that intent, we have invited Rhythm. And Rhythm, thank you so much for accepting our invite and coming here. Everybody here is really eager and intent to really understand. We all want to really understand how we can prevent this dangerous disease from our life. So with that, all over to you. Thank you so much for the amazing description and introduction, Sangeeta ji. First of all, good morning, everyone. Before we get started, I would really like to thank you all for taking out the time to learn more about your own health, how we can improve it. And I really hope that this curiosity of yours helps you fuel and take you towards achieving your optimal health. Today, as we discussed, we'll be speaking on the cancer risk and how we can prevent cancer through dietary and lifestyle modifications. Just a second, we'll get started. So what is cancer? When we keep talking about cancer, just to define it simply, when our normal healthy cells are outnumbered by the transformed cells and they proliferate very uncontrollably and unwantedly, that is when we term it as cancer. There are many ways that we can understand that our body, something is wrong with our body. So things like when there are ulcers, which are recurring ulcers in our mouth area or in our throat area, or when there's a pain which is
which cannot be even controlled by medicinal interventions. Strong stringent pain is there, unexplained immediate weight gain or weight loss, while we didn't encounter any severe like diseases or anything. These are few of the things or ways of our body to tell us that something is wrong and we need to look into it. Many of these precursors that we spoke about right now, conditions, often lead to the development of or proliferation of cancer cells. So cancer cells, when we talk about Sorry, them, sorry. yes, Yeah. so sorry. Well, English is good. I think English would be better. Okay. So should I keep a combination of Hindi and English, you're saying, Yes, right? yes, Okay, yes. okay. All right. कैंसर के बारे में जैसे हमने जाना है कि जब नॉर्मल सेल्स जो होते हैं हमारे, उनको ओवरपावर करने लग जाते हैं चेंज्ड सेल्स, जिनका प्रोलिफरेशन या फिर ग्रोथ और ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता है, तो वो कैसे बढ़ती है? हमने जैसे पीछे डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल वेट गेन या वेट लॉस एकदम से हो जाना, जबकि हमें पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है. अनदर थिंग इज जैसे पेन होना कोई एरिया में जो अनएक्सप्लेन्ड है और डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन दे दी, उसके बाद भी वो पेन जा नहीं रहा है. There were other things like tumor formations are very common, जहाँ पे हम देखते हैं कि बॉडी में या स्किन के अंदर हमारे कोई ट्यूमर या फिर कोई एक अजीब सी ग्रोथ दिख रही है, which is unadministered. These are a few things जहां से हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में या हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, जो हमें एडमिनिस्टर करना है या देखना चाहिए, उसकी तरफ फोकस करना चाहिए थोड़ा. मूविंग ऑन, कैंसर होता किन चीजों से है? सो बेसिकली कार्सिनोजेंस इस टाइप के एजेंट होते हैं विच प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. वो कैंसर की प्रोग्रेस को बढ़ा देते हैं. इनका थोड़े से हम एग्जाम्पल समझेंगे हमारी डे टू डे लाइफ में, जो हम पा सकते हैं ये कार्सिनोजेंस कौन से हैं. सो जब हम अगर हमारे घर में देखें तो हम जो नॉन स्टिक कुकवेयर यूज करते हैं या एल्यूमिनियम यूज करते हैं कुकवेयर, सो ये भी कार्सिनोजेनिक होता है, बिकॉज जब हाई हीट टेम्परेचर पे जैसे हम एल्यूमिनियम के कुकवेयर में कुक करते हैं, देन एल्यूमिनियम सीप इन कर जाता है हमारे फूड में और उसके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है और कार्सिनोजन जैसे एक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल सेल्स जो वो एक्चुअली कैंसरस बनने के चांसेस उनके ज्यादा हो जाते हैं, और जो कैंसरस सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो प्रोलिफरेट या बढ़ने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं. सेम इज फॉर नॉन स्टिक. हमारे जो कुकवेयर होते हैं उनकी जो कोटिंग होती है, केमिकल बेस्ड कोटिंग, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हीट, एक्सट्रीम हीट में जाके हमारे फूड में आने लग जाती है और फूड के थ्रू ये हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी और हमारे गट तक पहुंच जाते हैं. सो एक बेसिक अगर हम समझें तो जब हम खाना, कोई भी खाना खाते हैं, उसमें खाना सबसे पहले हम च्यू करते हैं माउथ में, उसके बाद खाना जाता है हमारे स्टमक में जहाँ वो ब्रेक होता है, और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स. सो यही ये वाले कार्सिनोजेंस जो हैं इस तरीके से इस पाथवे से हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं थ्रू इंजेशन. दैट इज वन वे और पाथवे ऑफ कार्सिनोजेंस, जो हम आगे भी देखेंगे और कितने पाथवेज होते हैं. मूविंग ऑन, प्लास्टिक फूड कंटेनर्स. आज हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक फूड कंटेनर्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि जब हम इस हाई टेम्परेचर वाले फूड को, जैसे हमने फूड को कुक किया जो कि गर्म टेम्परेचर पे है, और उसको हमने प्लास्टिक कंटेनर में भर दिया, सो उसमें से माइक्रो प्लास्टिक्स लीच करते हैं हमारे फूड में और हमारी बॉडी में जाते हैं, और लेटर स्टेज पे दे एक्ट एज कार्सिनोजेंस एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. If we were to look at household cleaners or utensils जैसे हम धोते हैं, all those chemical based products, again through जैसे हमने for example we wash our dishes with the cleaning agents or soap, detergents. सो वही चीजें हमारे अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, नो मैटर हम कितना भी उसको पानी से धोएं, थोड़ा सा अमाउंट हमारे बॉडी में जाता ही जाता है. इट स्टेज ऑन द प्लेट्स एंड द स्पून्स और समथिंग और द अदर थ्रू विच वी ईट. तो ये इस तरीके से, इस पाथवे से ये केमिकल्स, हमारी हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं.
when we talk about paints and varnishes and even candles. So these emit really harmful gases like benzene and toluene, जो जब हम inhale कर लेते हैं, they act as carcinogen in our body. Sorry. Where can we find them in our surroundings? So we might have seen, or we know now that smoking actually causes lung cancer. Though smoking का indirect relation है, but it acts, the smoke that is released from tobacco acts as a carcinogen. And when it enters our body, it causes or promotes the growth of cancerous cells, and at later stage leads to lung cancer. UV rays हम बोलेंगे, which are harmful, and many times they end up causing skin cancers. Asbestos hai, diesel engine exhaust hai, all these pollutants basically, when we inhale them, tab these chemicals enter into our body and they act as carcinogens and promote the development of cancer. Same stands for aflatoxins and arsenic, which are really harmful. Now, where can we find them in our food? Acrylamide is one of the basic, these days there are many researchers which have confirmed that acrylamide, which is a food compound, it is formed in our food when we heat it up, specifically the high in starch food. When it's heated up at a high temperature for a longer period of time, तब acrylamide का formation होता है. ये acrylamide जब हमारी बॉडी में जाता है, तो ये कार्सिनोजन जैसे एक्ट करता है, क्योंकि ये जाके हमारे नॉर्मल जो सेल, हेल्दी सेल है, उसके डीएनए के साथ जाके बाइंड होके उसको कैंसरस सेल बनाने में प्रमोट करता है. पेस्टिसाइड्स जो यूज होते हैं हमारे फूड में, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो यूज होते हैं, दीज पेस्टिसाइड्स आर रियली हार्मफुल. जब इसको हम उसका काम है कि पेस्ट ग्रो ना करे, बट व्हेन वी रिसीव दीज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एट आवर होम, ये पेस्टिसाइड अगर उसमें से रिमूव नहीं होते हैं तो ये हमारी बॉडी या ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, जिसके थ्रू ये इट कैन एक्ट एज अ कार्सिनोजन and later on promote the growth of cancer cells. Same stands for processed meat and processed food. फ्राइड स्टार्ची फूड होते हैं, जैसे फास्ट फूड है जिसमें हाई टेम्परेचर्स पे कुक होता है, जैसे जो हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, बर्गर्स की जो पैटीज होती है, ऑल दीज थिंग्स जिसमें हाई फैट वाले फूड्स होते हैं हमारे, और फ्राइड वाले, ये डायरेक्ट कार्सिनोजेनिक होते हैं जब दे एक्ट एज अ कार्सिनोजन जब हमारी बॉडी में वो एंटर करते हैं. नाइट्रेट जो कि एक फूड एडिटिव जैसे यूज होता है इवन इन स्टोरेज ऑफ मीट, उसमें भी ये हम पाया जाता है कि इट एक्ट्स एज अ कार्सिनोजन जब वो हमारी बॉडी में अनवांटेड केमिकल्स और अनवांटेड आइटम्स जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, दे एक्ट एज कार्सिनोजन. अब हम इन कार्सिनोजेंस की एंट्री रूट समझते हैं. सो बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया, इट कैन बी एब्सॉर्ब्ड थ्रू द स्किन, हमारे एनवायरमेंट से. इट कैन बी इनहेल्ड, हम इनहेल कर सकते हैं उसको. हम जैसे हम स्मोक को जब हम, इवन इफ वी आर अ पैसिव स्मोकर, हम पैसिवली स्मोक कर रहे हैं, हम डायरेक्टली हम स्मोक नहीं कर रहे, पर हमारे आसपास लोग स्मोक कर रहे हैं और हमने उसको ब्रीद इन कर लिया, तो भी थ्रू इनहेलेशन हम ये कार्सिनोजेंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं हमारी बॉडी में. थ्रू इंजेशन, थ्रू आवर फूड दैट वी ईट, जैसे हमने डिस्कस किया आगे, एक्रिलामाइड, डिफरेंट नाइट्रेट्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. थ्रू इंजेक्शन, by through bloodstream, basically they get injected into our bloodstream. And also ambient exposure, जैसे हमारे एकदम आसपास के environment. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी चीज जो हम कई बार नोटिस नहीं करते हैं, हमारे दीवारों पे जो मोल्ड लगी रहती है कई बार, जो हम साफ सफाई कई बार करने में भूल जाते हैं, बाई चांस वो ग्रो हो जाती है, स्पेसिफिकली इन अ प्लेस लाइक मुंबई जहाँ पे मॉइस्चर फुल है. सो वहां पे ये एम्बियंट एक्सपोजर से, मोल्ड के ग्रोथ से, ये मोल्ड हमारे ब्रेथ के थ्रू एंटर कर सकते हैं, एंड दे ऑल्सो कैन एक्ट एज अ कार्सिनोजन एंड प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कैंसरस सेल्स. यहाँ पे अगर हम देख सकें, IARC is actually an organization. It's International Agency for Research on Cancer. It is a WHO body, World Health Organization की ये body है जो classifications of carcinogen देती है. तो आप में से कोई भी अगर और interested है इन carcinogens को जानने में, उनके बारे में जानने में,
उनके क्लासिफिकेशंस को जानने में। सो इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इस चीज को दे रखा है, जहां पे इन्होंने किस टाइप के या किस ग्रेड के कार्सिनोजेंस है उसको भी बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया रखा है। सो आप IARC.WHO.INT पे जाके इसको ढूंढ सकते हैं और इसके बारे में और पढ़ सकते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। बिफोर वी डाइव डीप इनटू अंडरस्टैंडिंग के हम डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कैसे इन चीजों को ठीक कर सकते हैं या फिर कैंसरस सेल्स का ग्रोथ को डिले कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं, लेट्स टेस्ट कि हमारी अभी की नॉलेज जो है वो कैसी है इन टर्म्स ऑफ आवर हेल्थ और मिथ्स जो है। सो लेट्स टेक अ क्विक क्विज दैट वी कैन गो थ्रू। I think all of the participants, when we go to the questions, आप yes या no में comment कर सकते हैं and you can let us know what are your opinions on this. So our first question is, if my parents had cancer, I will get it too. What is your take on it? Do you feel if our parents had cancer, हमें होगा ही होगा cancer या फिर नहीं होगा? So yes or no में please put on your replies. And there's a small hint in it कि कैंसर को आजकल हम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोलने लगे हैं, बिकॉज जेनेटिक कैंसर्स जो होते हैं दैट इज हार्डली 20% ऑफ द कैंसर्स टर्न आउट टू बी जेनेटिक। मोस्ट ऑफ कैंसर्स जो हम आजकल देख रहे हैं वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो रहे हैं। सो प्लीज गो अहेड। So yeah, maximum people have replied no. All And right. yeah, and the Preeti That's Palav has said it depends on type of cancer. all right. All right. Good to see that many of you do know that cancer is not totally cancer का onset या उसका progression directly dependent नहीं होता है genetics पे। Due according to latest researches, only 40% मतलब relation होता है हमारे जीन से in the progression of cancer। 60% वाली जो हमारा aspect है that lies in our own hands। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हम कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या पोल्यूटेंट्स हैं, कार्सिनोजेंस हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, ऑल दीज थिंग्स मैटर मोर एंड दैट इज वाई हमारी हेल्थ आज हम बोल सकते हैं हमारे हाथ में है व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर, एंड दैट इज वाई वी डू हैव होप इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज आवर गट हेल्थ कनेक्टेड टू कैंसर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इज इट डायरेक्टली कनेक्टेड और उसका कोई लिंकेज है कैंसर के ग्रोथ या डेवलपमेंट से? हिंट यहाँ पे हमारी है कि जब टॉक्सिन का बिल्डअप हो जाता है बॉडी में या गट में, तो वो लेटर हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को बेसिकली डिसरप्ट करती है। सो इसका को लिंकेज क्या निकलता है कैंसर से? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? Okay. Majority of the people have replied that yes, gut health is connected to cancer. All right. So for example, हम कोलोन कैंसर का एग्जाम्पल देखें, उसमें बेसिकली जब ये टॉक्सिन का बिल्डअप हो जाता है हमारी बॉडी में एंड when we have prolonged constipation, continuous constipation हमें प्रॉब्लम रहता है constipation का, तब ये टॉक्सिन्स का बिल्डअप की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। There are great chances of having ulcers in the colon area which can later lead to colon cancer. Also, gut is a very important organ हमारी बॉडी का, जो ना केवल हमारे सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है ताकि हम अपनी ऑप्टिमल हेल्थ पे रह सकें, बट वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। हमारी इम्यूनिटी कैसी होगी वो हमारी गट हेल्थ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जैसे कि हम समझते हैं गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, क्योंकि गट हेल्थ पे आजकल बहुत सारी डिस्कशंस हो रही है। सो गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ अगर कम होता है, वो कम होता है कैसे? जब ये टॉक्सिन का बिल्डअप बढ़ जाता है, तो गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ कम होता जाता है और बैड बैक्टीरिया उन टॉक्सिन्स पे बेस करके बढ़ते ही जाते हैं। उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, वन और द अदर हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट्स एंड लेटर स्टेज पे कैंसर सेल्स का ग्रोथ इससे डायरेक्टली बढ़ता है अगर हमारी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
high protein diet are essential to prevent cancer. A high protein diet डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं. हम सब आजकल प्रोटीन के पीछे भागे जा रहे हैं कि हमें प्रोटीन चाहिए हमारे खाने में, हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो हम वीक हो जाएंगे. सो इस पे आपका क्या टेक है? डू यू फील कि एक हाई प्रोटीन डाइट ही हमें कैंसर से प्रिवेंशन में हेल्प कर पाएगी? इसका हिंट है हमारे लिए कि एंजाइम एक्टिविटी जो होती है, विच एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो भी प्रोटीन ही होते हैं एक तरीके के. वो प्रोटीन इंटेक से लिंक्ड होते हैं और वो फर्दर लिंक होते हैं कार्सिनोजन जो होते हैं उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी टुवर्ड्स आवर डीएनए. So what is your take on it? We haven't clearly told you in the hint के direct relation होता है, मतलब positive relation होता है, negative relation होता है, या direct या indirect relation होता है. But what is your take on it? So the majority of the people have said no. High Okay. protein diets are not is not essential to prevent cancer. That is really good to know that many of you are quite updated हैं आप in terms of what is actually good for our health and what is not. So when we talk about high protein diet, जो अभी हाई प्रोटीन डाइट प्रमोट हो रहे हैं दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग इज अ एनिमल बेस्ड प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट, जो कि लेटर स्टेज पे इट ऑल्सो प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. वो उसको उल्टा नहीं करता है, कैंसर से हमें प्रिवेंट करवाने में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि ये जब प्रोटीन इंटेक एनिमल बेस्ड प्रोटीन इंटेक हमारा ज्यादा होता है तब एंजाइम एक्टिविटी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है. जब ये एंजाइम एक्टिविटी हमारी बॉडी में बढ़ता है तो कार्सिनोजेंस जो होते हैं जो हमने आगे देखे वो हमारे हेल्दी सेल्स के डीएनए से जाके बाइंड करने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है. और इसी की वजह से जब ये प्रोटीन इंटेक हाई होगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी हाई होगी और उसी की वजह से हमारे कार्सिनोजेंस हमारे डीएनए को चेंज कर पाएंगे, जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स का ग्रोथ बढ़ जाएगा एंड वो प्रोलिफरेट करेंगे. सो अगेन इट इज अ मिथ. मूविंग ऑन, इज फाइबर इंटेक इंपॉर्टेंट फॉर फाइटिंग कैंसर? सो इसका हमारा हिंट है कि टॉक्सिन्स एक्चुअली किक आउट कैसे होते हैं बॉडी से. बॉडी इस चीज को किक आउट लास्ट स्टेज पे किक आउट कैसे करती है? इन द गट एरिया. So you would be happy to know that our audience is quite knowledgeable. Everybody has said yes. That's amazing. That's amazing, amazing. So fiber basically has shown to promote the, how do you say, the reversal of cancer. According to new researches also and latest studies, फाइबर को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को एनर्जी लगती है एंड उसमें से जो लीच आउट होता है एनर्जी जो डाइजेशन पे हमें मिलती है वो स्लोली प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स जो कि ग्लूकोज पे थ्राइव करते हैं दे आर नॉट एबल टू गेट दीज जो हमें एनर्जी मिलती है इनके डाइजेशन से, वो ले नहीं पाते और यही हेल्दी सेल्स ले लेते हैं. सो फर्स्ट हमारी जीत वहां पे होती है. सेकंड, जब ये फाइबर आता है हमारे गट एरिया में तो जितना भी टॉक्सिन बिल्टअप होता है जो हमने आगे के क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमारे गट में, ये सारे टॉक्सिन्स को लेके वो बाइंड करके बाहर निकलता है हमारी बॉडी से. तो हमारे गट को हेल्दी रखता है. गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो फाइबर पे फीड करते हैं ताकि वो और बढ़ सके, जबकि बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसमें बाइंड होके बाहर निकलते हैं. So that way it promotes and helps us in proliferation of healthy cells, not the cancerous cells. Now, for the same, let's understand what is the link between diet and cancer. First, we would be starting with oxidative stress. आजकल बहुत सारे लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये वर्ड्स टर्मिनोलॉजी सुनी होगी. सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम अगर लेमन टर्म में समझना चाहें तो हमारी बॉडी जब कोई कभी भी अंडर स्ट्रेस होती है ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजंस लाइक मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, ऑलरेडी जो कंडीशंस है लाइक हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, डायबिटीज, एनी ऑनगोइंग क्रॉनिक इलनेस और अक्यूट इलनेस एज वेल, उनकी वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है बॉडी में, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में जो कि इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाते हैं हमारी शरीर में. एंड यही इसकी वजह से जाके कैंसर सेल्स जो होते हैं हमारे
उनका ये कार्सिनोजेंस जो भी प्रेजेंट होते हैं उस टाइम हमारी बॉडी में जाके हेल्दी सेल्स में बाइंड हो सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं, कन्वर्ट देम, इट कैन कन्वर्ट देम इनटू कैंसरस सेल्स, और जो कि कैंसर सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो जाके ग्लूकोज को बहुत इजीली स्केवेंज कर लेते हैं या छीन लेते हैं हमारे हेल्दी सेल से। इट इज लाइक एक फाइट जब चल रही होती है बॉडी में और आपके हेल्दी सेल्स का ऑलरेडी डैमेज हो रहा है, तो वो अपने लिए ग्लूकोज एब्जॉर्ब करके अपना रेगुलर काम भी नहीं कर पा रहे हैं और उनमें उनके माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी डैमेज हो रहा है। सो ये कैसे प्रिवेंट करते हैं हम? फूड्स जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हम जानते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है, जो कि जाके हमारी बॉडी में जब ये रिलीज होता है तब जाके वो इन फ्री रेडिकल से बाइंड होता है। सो इस तरीके से वो बाइंड होके उसको बॉडी से बाहर निकालता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल्स हमारे कम होते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिवर्स होता है थ्रू एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, मूविंग ऑन टू हार्मोनल रेगुलेशन। हॉर्मोन्स जब हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स हो या फिर हमारे सेक्स हॉर्मोन्स हो, या फिर हमारे फीमेल हॉर्मोन्स या मेल हॉर्मोन्स हो, स्पेसिफिकली लाइक ब्रेस्ट कैंसर का अगर हम प्रोग्रेशन समझें, तो जब हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स, ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं, उसके थ्रू हमारे दूसरे हार्मोन्स जैसे थायराइड है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए इंसुलिन है बेसिकली, सो दिस प्रमोट्स द imbalance actually in these aspects as well. एक हार्मोन अगर इम्बैलेंस होता है तो वो दूसरे हार्मोन की बैलेंस को भी बिगाड़ता है। सो इनडायरेक्टली ये सारे कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। अगर आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपको, देयर इज अ हायर चांस कि आपके प्रोजेस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन लेवल्स इफ यू आर अ फीमेल वो बढ़े, इम्बैलेंस रहे। एंड अगेन अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन लेवल इम्बैलेंस है तो आपका इंसुलिन लेवल्स पे भी असर आ सकता है। सो दे आर बोथ लिंक टू ईच अदर। उसी तरीके से जब ये हॉर्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, उसका रेगुलेशन नहीं होता है, तो हमारी बॉडी में इस टाइप का इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से अगेन कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो अपना काम कर पाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस होता है, एंड वी आर नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट इट बिकॉज बॉडी ऑलरेडी इन हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में लगी रहती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। मूविंग ऑन टू आवर गट हेल्थ इंप्रूवमेंट। गट हेल्थ जैसे हमने समझा कि गट में बेसिक एब्जॉर्प्शन होता है, हमारी इम्यूनिटी भी गट हेल्थ पे बेस्ड है, हमारे मूड भी गट हेल्थ पे बेस्ड होता है। वैसे ही डाइवर्स जब हम फूड्स खाते हैं, होल फूड्स खाते हैं, प्लांट बेस्ड होल फूड्स खाते हैं, तब हमें सारे एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स उतने मिलते हैं जिससे हमारी गट हेल्थ बेटर हो सके। सो गट हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, टॉक्सिन्स प्रॉपर्ली बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से कैंसर का प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाता है या तो रिवर्स हो जाता है। सो हाउ कैन वी ट्रांजिशन इनटू अ कैंसर फ्री लाइफस्टाइल? फर्स्ट स्टेप इज एज वी सो कि कार्सिनोजेंस जो हमारे आसपास हैं, हमारे खाने में है, हमारे घरों में है, इनको हमें एलिमिनेट करना है। दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। हम इनको यूज करना या हमारी बॉडी में या हमारे कांटेक्ट में आने से रोकेंगे। दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लिविंग अ कैंसर फ्री लाइफ। सेकेंड इज टू ट्रांजिशन। धीरे धीरे हम बॉडी को उसकी ऑप्टिमल लेवल पे ले जाएंगे बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज वर्किंग फॉर आवर बॉडी, व्हाट इज नॉट। हमारी बॉडी में जो इश्यूज हैं जिनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे आज हमारा एनर्जी लेवल इतना अच्छा नहीं है, हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं और सोचते हैं आज सो के एनर्जी लेवल वापस आ जाएगी। बट इफ यू आर फीलिंग लेथार्जी ऑन अ डे टू डे बेसिस, इट इज एन इंडिकेशन कि आपकी बॉडी में कुछ गलत है, कोई चीज है जिसपे आपको वर्क करना चाहिए। सो ऑल दीज छोटी छोटी चीजें जो इंडिकेट करती है कि हमें चीजों को इम्प्रूव करना है, हम अपनी ऑप्टिमल हेल्थ के लेवल पे अभी नहीं है, हमें वहां पहुंचना है। सो विटामिन बी लेवल, B12 लेवल्स, विटामिन D3 लेवल्स, बोन में पेन होना, जॉइंट पेन होना, बैक एक, लोअर बैक एक होना, एनर्जी लेवल्स लो होना, ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हमारा प्रीकर्सर है कि हमें अब हमारी लाइफ में ट्रांजिशन करना है। So we start understanding these first and slowly and steadily हम transition चालू करते हैं।
And then last comes training for your health. So working on our dietary and lifestyle modifications rigorously so that we can promote the growth of healthy cells so that they can fight off these cancer cells and their growth and proliferation. Let's learn about these healthy swaps for the same. जैसे कि हम देख सकते हैं कैफीन बेस्ड कॉफी. एक छोटा सा आंसर मैं आप सबसे जानना चाहूंगी. कॉफी, डू यू थिंक कॉफी इज कैन एक्ट एज अ कार्सिनोजन इनडायरेक्टली? यस और नो में अगर आप क्विकली अपने चैट में आंसर दे सके. कॉफी बहुत सारे लोगों की फेवरेट आइटम होती है. मेनी पीपल स्टार्ट देयर डे विद कॉफी, बट डू यू थिंक इट कैन प्रमोट द onset of cancer और कैंसरस सेल को प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं? Yeah. I think this time we have mixed response. Few have said yes and few have said no. Alright, okay. So एक्रिलामाइड जो कि एक कार्सिनोजन है, जो हमने आगे जिसके बारे में समझा. कॉफी की जब रोस्टिंग होती है तब एक्रिलामाइड का फॉर्मेशन होता है. तो यही एक्रिलामाइड जब कॉफी की रोस्टिंग हो गई और कॉफी को हम वापस रीहीट करते हैं और पीते हैं, तो ये कॉफी के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाता है. इट एक्ट्स एज अ कार्सिनोजन. सो उसका हमारे पास हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या है? एंड ऑल्सो उसमें कैफीन होता है, विच इज अगेन इट डिसरप्ट्स आवर नर्वस सिस्टम. उसको हमारी एंशियसनेस को वो प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज होता है. लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में. उसी के लिए हमारा हेल्दी ऑल्टरनेटिव है व्हीट पीस. व्हाइट पीस जो होते हैं उसको हम वटाना बोलते हैं, आई थिंक गुजराती में. एंड इट इज इजीली अवेलेबल इन सुपरमार्केट्स एवरीवेयर. इसको अगर आप रोस्ट करेंगे नॉर्मली, व्हेन यू कुक इट एंड देन आप उसको पीसेंगे, सो इट इज अ हेल्दियर ऑल्टरनेटिव, कैफीन फ्री ऑल्टरनेटिव. और इसमें एक्रिलामाइड का फॉर्मेशन जितना कॉफी की रोस्टिंग से होता है और अनहेल्दी फूड्स में होता है उतना नहीं होता है. And it is a safer version for our coffee. So a healthier and safer version. हमारे दादी नाना पर दादी नाना ने खाया होगा फॉर एग्जाम्पल, वो उस टाइम का जो व्हीट होता था उसमें फाइबर ज्यादा होता था, ग्लूटेन का कंटेंट कम होता था. बट बिकॉज ऑफ इट्स कमर्शलाइजेशन उस टाइप का बना दिया है, इसमें फाइबर कम होता है और उसमें ग्लूटेन ज्यादा होता है. इसीलिए आप देखेंगे मेनी टाइम्स, आप ये खुद से भी नोटिस कर सकते हैं, जब आप रोटी खाते हैं, व्हीट की रोटी खाते हैं, आपका पेट प्रॉपरली कभी भरता नहीं है. मेनी पीपल कैन गो एंड ईट, आप 2-3 रोटी लगातार खा सकते हैं. या फिर आपने अभी लंच किया रोटी का, आपको हर 2 घंटे में भूख भी लग जाती होगी अगर आपने नोटिस किया. सो दिस हैपेंस क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट कम है एंड ग्लूटेन लेवल ज्यादा है. ग्लूटेन क्या करता है वो हम अभी थोड़ी देर में एक बार डाइटरी स्वैप समझें, उसके बाद हम समझेंगे कि ग्लूटेन एग्जैक्टली बॉडी में जाकर क्या हार्म करता है एंड इनडायरेक्टली कैसे कैंसर को भी प्रमोट करता है. सो इसका व्हीट फ्लावर का हेल्दी ऑल्टरनेटिव इज ज्वार, रागी, बाजरा, बकव्हीट और मिलेट्स, जो कि हमारे एक्चुअली ओल्ड पुराने जमाने में यही ज्यादा कंज्यूम किए जाते. Wheat flour used to be more so of a royalty. हर जन wheat flour हर दिन नहीं कंज्यूम करते थे, जो कि हम अब करते हैं, which is the wrong way to go about it. So ज्वार, बाजरा, रागी, बकव्हीट, मिलेट्स को आप इंट्रोड्यूस करें अपनी लाइफस्टाइल एंड डाइट में इंस्टेड ऑफ wheat flour. Specifically at night, if you are transitioning from wheat flour, we would suggest कि आप उसको एटलीस्ट अपने रात के खाने में खाना चालू करें, बिकॉज आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बट आइडियली आपको इसको रिप्लेस करना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाइट शुगर. व्हाइट शुगर जो हमारी होती है, इट इज हाईली प्रोसेस्ड एंड इट व्हेन इट गोज टू इनटू आवर बॉडी, जब ये हमारी बॉडी में जाता है तब ये शुगर इजीली ग्लूकोज रिलीज करता है. जब ये फ्री ग्लूकोज रिलीज हो जाता है तो हमारे हेल्दी सेल्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते इतना इजीली, और कैंसर सेल्स इस चीज को 50% फास्टर रिसीव करता है, एब्जॉर्ब करता है और ग्रो करता है, जिसकी वजह से कैंसर
की ग्रोथ में ये हेल्प करता है। दैट इज वाई जब भी आप देखेंगे, अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर हुआ या एनीवन दैट यू नो ऑफ हैज कैंसर, डॉक्टर्स उनको सबसे पहले बोलते हैं कि आप प्रोसेस चीजें छोड़िए, विच ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाइट शुगर। उसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव हमारे लिए है पाम जैगरी, which is low in glycemic index also. Glycemic index basically means कि जब भी कोई शुगर वाली चीज हमारी बॉडी में जाती है, शुगर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो फॉर एग्जाम्पल ग्रेन है, जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारी शुगर लेवल्स बढ़ती है क्योंकि शुगर का स्पाइक होता है। सो बेसिकली ये स्पाइक ज्यादा ना हो, मतलब बेसिकली शुगर स्पाइक नहीं हो, इसलिए हम लो जीआई इंडेक्स वाले फूड खाने का आपको बोलते हैं, जिसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स उनका कम हो, जिसकी वजह से जब हम उसको खाएं तो शुगर लेवल्स एकदम स्पाइक नहीं हो हमारी बॉडी में। पाम जैगरी में लो, इट इज लो इन जीआई इंडेक्स, इसीलिए व्हाइट शुगर का हेल्दी ऑल्टरनेटिव इज पाम जैगरी। नेक्स्ट इज व्हाइट टेबल सॉल्ट. White table salt again is high in sodium, which in itself later stage पे हमारा बीपी भी बढ़ाता है, hypertension का फर्स्ट रीजन इज कंजम्पशन ऑफ व्हाइट टेबल सॉल्ट. इट इज ऑल्सो, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, वो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स नहीं होते उसमें जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है. सॉल्ट हम जिस रीजन की वजह से खाते थे वो इसलिए खाते थे ताकि वो ट्रेस मिनरल्स हमें मिले, ताकि बॉडी अपना काम कर सके और इम्यूनिटी स्पेसिफिकली हमारी बेटर हो सके. तो वो मिसिंग होता है व्हाइट टेबल सॉल्ट, जिसकी वजह से हमें रॉक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट, इस टाइप के सॉल्ट्स खाने चाहिए, जिसमें एक प्रॉपर बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है ऑफ ये मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सोडियम लेवल्स कम होते हैं. सो उतने ही होते हैं जितने हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, बट इतने नहीं होते कि हमें हाइपरटेंशन हो जाए. सो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को भी हम ये रेकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी अफेक्टेड होगी तो अगेन इट इज लिंक्ड विद प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर सेल्स. रिफाइंड कुकिंग ऑयल जो हम देखते हैं, सो रिफाइंड कुकिंग ऑयल increases our lipids in our body, फैट जो हम बोलते हैं. रिफाइंड कुकिंग ऑयल जो हम आजकल तलने के लिए यूज करते हैं या कुकिंग के लिए यूज करते हैं, दोज आर रियली हार्मफुल फॉर अस. एंड इसको जब हम हाई टेम्परेचर्स पे हीट करते हैं, बिकॉज फ्राइंग के लिए स्पेसिफिकली, तब हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, व्हिच लीड्स टू प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर. सो अगेन कोल्ड प्रेस ऑयल्स जो होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल जो होती है उनकी वो मेंटेन होती है, वो रिफाइंड नहीं होता है. तो जब बॉडी में वो जाता भी है, बेसिकली इट डजंट प्रमोट द लिपिड प्रोफाइल हमारी, वो नॉर्मल रेगुलेटेड रखता है, हमारे एचडीएल लेवल्स को मेंटेन रखता है और एलडीएल लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है. सो कोल्ड प्रेस मतलब कच्ची घानी जो हम बोलते हैं, हमारे कल्चर में ही ये चीजें इंड्यूस थी हेल्दी वाली अगर हम देखें तो, बट समवेयर अदर ये लॉस्ट हो गई एंड नाउ वी आर कमिंग बैक टू इट. सो अगेन रिफाइंड कुकिंग ऑयल से वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कोल्ड प्रेस कुकिंग ऑयल्स. एनिमल बेस्ड मिल्क इज आवर नेक्स्ट. सो एनिमल बेस्ड मिल्क्स में जो अभी हो रहा है इशू इज फर्स्ट, जो प्रोटीन्स में हमने बात की. So animal protein is shown to promote the onset and progression of cancer. First reason is that. Second, जो हम आज दूध पीते हैं उसमें इंजेक्टेड हॉर्मोन्स और एंटीबायोटिक्स आते हैं, जो कि उन काउस को या बफेलोज को दी जाती है ताकि उनका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो और वो बीमार नहीं पड़े. पर यही चीजें लीच आउट करके उनके मिल्क के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, कैंसर का प्रोग्रेशन भी होता है और हमारा इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज होता है. प्लस ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो काउ के बेबी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके मिल्क के थ्रू जो उसको मिलते हैं, जो हमारे जैसे ह्यूमन मिल्क से हमारे बच्चों को मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल. सो वो ग्रोथ फैक्टर्स भी हमारे अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से it is a leading cause for breast cancer as well. There are strong linkages for it these days. We can see it very clearly in the recent studies. So moving towards nuts, seeds, soy-based milk और plant-based milk जो हम बोलते हैं, उन पे हम जाएं ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं वो एब्जॉर्ब भी बेटर होते हैं. बी इट कैल्शियम, बी इट प्रोटीन, बी इट ऑल दोज ट्रेस मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, बी कॉम्प्लेक्स, बी
all these things get absorbed in our body and in our gut very well, जिसकी वजह से हमारे good bacteria भी grow होते हैं and bad bacteria का growth कम होता है. Cookies and biscuits, again it is a refined version of the same. So हमें यही highly processed foods को नहीं खाना है, which can reverse. इसको हम अगर मखाने पे जब हम शिफ्ट करते हैं या roasted चना या red rice puffs पे जाते हैं, so they help in reversing cancer. Moving on, healthy home swaps. जैसे कि हमने देखा the surrounding, हमारे surrounding में जो carcinogens होते हैं, जैसे aluminium and non-stick cookware होते हैं, so we can replace that with iron, stainless steel, clay, bronze based cookware, जिससे हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे हम आयरन, हमारे कल्चर में भी आप देखें तो आयरन के आई थिंक स्किलेट पे या आयरन के तवे पे हम रोटी बनाते हैं ताकि हमारी बॉडी को आयरन अच्छा से मिले. स्टेनलेस स्टील इज अगेन नॉन रिएक्टिव, इसीलिए हमें उसमें कोई कोटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से कोई भी केमिकल्स लीच आउट करके हमारी बॉडी में नहीं जाते. सो मूविंग ऑन फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड नॉन स्टिक, वी शुड शिफ्ट टू आयरन का, स्टेनलेस स्टील का, क्ले का या ब्रॉन्ज रिलेटेड. इस टाइप के हमारे जो ट्रेडिशनल कुकवेयर जो है उस पे हमें शिफ्ट होना चाहिए. नेक्स्ट इज फूड एजेंट्स, जो हम देखते हैं जो कि कमर्शियलाइज्ड होते हैं, केमिकल बेस्ड होते हैं. उससे हमें जाना है टुवर्ड्स समथिंग व्हिच इज आल्सो गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंड आल्सो गुड फॉर योर बॉडी, जो कि है बायोएंजाइम्स. बायोएंजाइम्स कुछ नहीं होते हैं, ये फर्मेंटेड फॉर्मेशंस होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स बनाते हैं. आई थिंक संगीता जी और बेटर इसके बारे में बता पाएंगे बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन टुवर्ड्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो. बट ये बायोएंजाइम्स हमारी बॉडी में अगर आते भी हैं, so they don't harm our body, हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और कैंसर सेल्स के ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते, और उल्टा उसको प्रोलिफरेशन, हेल्दी सेल्स के प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी बैलेंस में रह पाती है. संगीता जी, would you like to share a few bits about bioenzymes and your experience with the same first? I think we'll do it towards the end. Let's just finish with this. Right. Yeah. Okay. Yeah. Just a second. Okay. So when we use microwave these days to heat our food, sorry. So heating our food in microwaves are not very safe when it comes to health concerns. It promotes the growth of cancer cells in our body. जब microwave वाला जो फूड होता है, जब हम उसको हीट करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, फर्स्ट थिंग जो हम रुकवाते हैं to lead a cancer-free lifestyle is to avoid the use of microwave. So we can go to the traditional methods of heating food on either induction or a gas stove. Sorry. Yes. So moving on, वेजिटेबल लिक्विड वॉश, या जो हम वेजिटेबल्स को धोने के लिए कई बार लिक्विड्स यूज करते हैं या कई बार धोते भी नहीं. सो ये पेस्टिसाइड्स जो हमने डिस्कस किए थे जो कि होते हैं उसमें, उसको बाहर हम कैसे निकालें? अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ इट इज होम ओजोनेटर. सो व्हाट होम ओजोनेटर डज इज ओजोन रिलीज करता है जो कि जाके इन पेस्टिसाइड से बाइंड हो जाता है और उसको निकाल देता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. So ये हम यूज कर सकते हैं. And if we don't have a home ozonator or if we don't buy one, what we can also do is wash our vegetables very thoroughly with apple cider vinegar, a bit of that and a bit of salt. वो भी हम कर सकते हैं. But just keep it for 10 to 15 minutes in that water which has apple cider vinegar and a bit of salt in it. मिनरल ऑयल जो हमारे हेयर ऑयल्स में मिलता है, मेनी ऑफ अस यूज बेसिक, हम जैसे या तो पैराशूट यूज करते हैं या तो द कोकोनट ऑयल हम यूज करते हैं. बट जब हम इनका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ते हैं उसमें मिनरल ऑयल आता है. जस्ट टू गिव अ क्विक चेक ऑफ द सेम, अगर आप कमेंट सेक्शन में चैट में लिख सकें आप कौन से ब्रांड का ऑयल यूज कर सकते हैं, सो वी कैन गो बैक होम एंड चेक ऑन द सेम कि उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में मिनरल ऑयल है या नहीं, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड ऑन द सेम.
आप प्लीज कमेंट करेंगे, ऑल द पार्टिसिपेंट्स. I think parachute is the most common hair oil, right? Yes, yes, कुछ yes. कुछ चीजें इंडिया में स्टैंडर्ड है, जैसे बिस्लरी, Yes. पैराशूट, So you know, before we Colgate. use, correct. So before we use any hair oil, it is always it is better कि हम उसका लेबल चेक करें. हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं, उसकी लेबल्स पढ़ें, उसके अंदर एक्चुअली क्या है, क्योंकि जो आगे लिखा रहता है दैट इज जस्ट अ ब्रांड लेबल. वो पूरी रियलिटी नहीं बताता है चीजों की. जिस टाइप से हम फूड्स का आजकल लेबल चेक करने लगे हैं, सिमिलर वे में हमें इस टाइप की हमारी जो चीजें हम यूज करते हैं, जैसे मॉइस्चराइजर है या हमारे एसपीएफ जो हम यूज करते हैं, सनस्क्रीन यूज करते हैं, द हेयर ऑयल दैट वी यूज, ये सारी चीजों के इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको चेक करके लेना चाहिए, ताकि उसमें मिनरल ऑयल या हार्मफुल केमिकल्स का प्रेजेंस नहीं हो. एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू गो टू natural remedies rather than sticking towards these kind of chemical based products. Someone scribbling, I think, on the presentation. I don't know why. Okay. Is it visible? Is there some scribbling there? Okay. All right. Okay. So ये मिनरल ऑयल को हम अवॉइड करें हमारे हेयर में, क्योंकि मिनरल ऑयल बेसिकली व्हेन इट थ्रू आवर स्कैल्प इट सीप्स इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम एंड गोज इनटू आवर बॉडी एंड प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ कैंसर बिकॉज इट एक्ट्स एज अ कार्सिनोजन. सो उसकी जगह हमें होममेड ब्लेंड ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स लेना चाहिए. जब भी हम कोकोनट ऑयल भी खरीदे, वी शुड मेक श्योर कि उस कोल्ड प्रेस हो, इट इज नॉट कंटेनिंग एनी अदर केमिकल्स और मिनरल ऑयल इन इट, even if we are using coconut oil. A very good oil for people with thinning hair or the ones who have scanty hair is also sesame based oil and castor oil. अगर आप वो cold press करें, that is also very beneficial. That is just an extra tip in the same. Fluoride containing toothpaste. हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड है क्या? Do we know this? How many of us are using Colgate? Can you put a yes in it? In the comment section. I think majority is yes, including me. Cool. Okay. So basically what happens is इसमें भी most of our toothpaste contain, जो commercial toothpaste है उनमें chemicals भी रहते हैं और fluoride भी रहता है, which is a carcinogen. It acts as a carcinogen in our body. So first thing, हम उठते ही सब पहले brush करते हैं. हमारी टंग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव रहती है. इट एब्जॉर्ब्स व्हाटएवर कम्स ऑन इट इन द मॉर्निंग, और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर हम इस टाइप के केमिकल्स को व्हेन वी आर ब्रशिंग, इन अ वे हम उसको इंजेस्ट कर रहे हैं, which in itself is promoting the growth of the cancer cells in our body. So we have to shift to fluoride free toothpaste. आपके टूथपेस्ट में हमेशा पीछे बैक ऑफ द लेबल पढ़ के लीजिए कि इसमें फ्लोराइड ना होना चाहिए. And generally Colgate is not what we generally suggest to our patients. प्लास्टिक कंटेनर्स, एज वी सॉ अर्लियर, उसका मैकेनिज्म हमने समझा कि जिस टाइप से माइक्रोप्लास्टिक्स लीच आउट करके कार्सिनोजन जैसे एक्ट करते हैं. सो अगर आप देख सकें यहाँ पे साइड में आपके राइट साइड, वी हैव गिवन अ वेरी इजी वे ऑफ स्वैपिंग द प्लास्टिक्स जहां जहां वो यूज में आ रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक के जो हमारे कुकवेयर है उसको हम वुडन या स्टेनलेस स्टील बेस्ड स्पून या इन चीजों से यूज कर सकते हैं. वी कैन रिप्लेस देम. वी कैन रिप्लेस आवर प्लास्टिक बॉटल्स विद ग्लास या स्टील वाली बॉटल से हमें रिप्लेस करना चाहिए. द एल्यूमिनियम फॉइल और प्लास्टिक पैकेजिंग ऑल्सो जो हमारी होती है उसको हमें रिप्लेस करना चाहिए विथ क्लॉथ, और there are different ones, good kind of cloth as well available in the market जो environment friendly भी हो जाएगा and it's reusable. So again it is good for our health also and good for the environment also. And plastic containers जो होते हैं, हमारे डब्बे जो हैं प्लास्टिक के, टपरवेयर के या फिर इस टाइप से जो हम यूज करते हैं घर में स्टोरेज के लिए, that we can replace with containers which are, or stainless steel containers are also. Rhythm, if you want to stop and reshare so that the scribble might go away.
Okay, all right, I'll do that. Yes. That's good. Yeah, now All it's right. 1 second. Yes. So dietary interventions हमने समझे. The swaps, healthy swaps that we could do. We have also understood कि हमारे आसपास या हमारे घर में ऐसी क्या चीजें या हमारे एनवायरमेंट में ऐसी क्या चीजें जो हमें एलिमिनेट करनी है, अवॉइड करनी है. उसके साथ साथ हमें क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट स्पेसिफिकली लाइफ है जिसपे हमें काम करना है. सो नॉट ओनली डाइटरी मॉडिफिकेशंस बट ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी हेल्प करती है हमें टू स्लो द प्रोग्रेस. सो रेगुलर एक्सरसाइज मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करना इज रियली इम्पोर्टेंट. वी डू नो दैट जितना ज्यादा हमारा स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल होता है या सिडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, उससे नॉट ओनली कैंसर का प्रोग्रेशन होता है बट ऑल्सो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस का प्रोग्रेशन होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके. आई थिंक मे बी आवर स्पीकर के एंड पे शायद कुछ नेटवर्क इश्यू रहा होगा, सो जस्ट प्लीज होल्ड ऑन. आई थिंक she'll rejoin. Yes, I think there was some technical glitch. That's why the it dropped me out of the meeting. 1 second, I'll Do you share want my me to share with them? No, it's okay. Okay. All right. Is it visible now? It's coming up. Yeah. Yeah. There it is. Okay. So as we discussed, regular exercise is very important for us, and it also promotes our the good growth. बेसिकली हमारे हेल्दी सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, उसको और स्ट्रॉन्ग करता है और हार्मोनल बैलेंस को भी रेगुलेट करता है. सारे टॉक्सिन्स को हमें जब किक आउट करना होता है तो वो जब हम मूवमेंट करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो बेटर होता है और इस वजह से हमारी गट की हेल्थ भी बेटर होती है. सो अगेन इट लीड्स टू हेल्दी जो हमारे सेल्स हैं उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है फिजिकल एक्टिविटी एंड रेगुलर एक्सरसाइज, वेराज कैंसर सेल्स के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन और रिवर्स करता है. स्ट्रेस रिडक्शन, एज वी डिस्कस्ड के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में जो हमने समझा था, जब भी हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है ड्यू टू इंटरनल थिंग्स विच आर हैपनिंग, फॉर एग्जाम्पल इम्बैलेंसेस जो होते हैं, कोई कंडीशन डिजीज है हमें, या तो हमारे स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है जो अगेन लीड्स टू प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर. सो अगेन स्ट्रेस रिडक्शन पे हमें काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्पेसिफिकली आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल
जहाँ पे स्ट्रेस हम इजीली लेने लग गए हैं, और उसको रेगुलेट या मैनेज करना इतना अच्छे से नहीं, हम उस पर कंसंट्रेट फोकस कर पा रहे हैं हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ। दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थ्रू मेडिटेशन, योगा या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लाइक अनुलोम विलोम, प्राणायाम जो हम बोलते हैं, प्राणायाम वाले एक्सरसाइजेस हम करें, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल मैनेज हो, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारा बढ़े नहीं, एंड अगेन कैंसर प्रोग्रेस नहीं करे। नेक्स्ट इज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप। स्लीप हम सब जानते हैं कि स्लीप अच्छी होती है तो हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारी एनर्जी हाई रहती है, हम बेटर फंक्शन कर पाते हैं। पर हमें पता है कि स्लीप के दौरान मेन बॉडी का रिपेयरिंग वर्क चलता है। जब हम पूरे दिन सुबह से शाम जगे रहते हैं, तब हमारी बॉडी डाइजेशन, रिपेयरिंग, टॉक्सिन रिमूवल का काम करती है, फाइटिंग का काम करती है बेसिकली। जबकि रात को जब हम सोते हैं, तब ये बेसिक चीजें, सबसे ज्यादा बड़ी चीज डाइजेशन ऑफ रहता है, क्योंकि डाइजेशन टेक्स अप ऑलमोस्ट अबाउट 80% ऑफ आवर एनर्जी व्हेन इट इज हैपनिंग। सो ड्यूरिंग आवर स्लीप वो 80% एनर्जी जो दिन में नहीं मिलती, वो हमारी बॉडी को मिल पाती है टुवर्ड्स द रिपेयरिंग वर्क। वही रिपेयरिंग वर्क में जहां जहां जो हमारे सेल्स, जिनका डीएनए थोड़ा भी ऑल्टर हुआ होता है, बॉडी उनके पास जाके रिपेयरिंग का काम कर पाती है। एंड ऑल्सो इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए भी एडिक्वेट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। According to some recent findings, this will help you navigate through your transition phase actually. हमारा immune system enhancement हमें अगर करना है, जैसे वायरल्स अभी होते हैं, तो हर जन को अगर हम देखें सीजनल चेंज जैसे आया, एंड स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड हम लोग बीमार ज्यादा पड़ने लगे हैं। हमें वायरल जल्दी हो रहे हैं, थ्रोट इन्फेक्शन जल्दी हो रहे हैं, फीवर जल्दी आ रहा है, बॉडी एक्स हो रहे हैं। कई लोगों को बीपी एंड शुगर की प्रॉब्लम आफ्टर पोस्ट कोविड आने लगी है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। सो हमें ये इम्यून सिस्टम पे वर्क करना बहुत जरूरी है, इसको ऑप्टिमल लेवल पे रखना बहुत जरूरी है, जो कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट से हम कर सकते हैं। एंड इट इज प्रूवन नाउ दैट इट इंक्रीजेस आवर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से लेटर स्टेज पे कैंसर का प्रोग्रेशन कम होता है, कैंसर सेल्स को ये किल कर पाते हैं बेसिकली। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हम देख रहे हैं, B12 D3 की डेफिशिएंसीज जो हमें होती है, दैट इज आल्सो बिकॉज ये न्यूट्रिएंट जो हम सोचते थे कि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से हमें ज्यादा मिलेगा, जैसे मिल्क से हमें विटामिन D3 मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा, उतना ज्यादा अच्छे से और रेडीली वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, बिकॉज वो गट में जाके इरिटेशन क्रिएट करता है, एंड ऑल्सो हमारे इम्यून सिस्टम को समवेयर अदर कॉम्प्रोमाइज करता है। इसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स जो जा भी रहे हैं बॉडी में, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, दस इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। एंड इंस्टेड जब हम प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स इसके लेते हैं, तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छे से होता है, डाइजेस्ट अच्छे से होता है, और इसी की वजह से हमारे गट को भी वो इम्प्रूव करता है, गट हेल्थ, एंड स्टेबली एब्जॉर्ब होता है। Cholesterol levels, these are a very big concern for us these days, even if we are eating simple food and जो हम बोलते हैं सब्जी रोटी दाल चावल हम खा रहे हैं सिर्फ, पर उसके बावजूद बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ये बेसिस, जैसे हमने समझा कि रिफाइंड ऑयल्स हम यूज कर रहे हैं, इन टाइप की चीजों की वजह से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होते हैं, specifically as we progress. So these days, if you must have seen, there's a culture जहाँ पे बहुत सारे young people भी पे प्रोटीन बहुत ज्यादा भर भर के खा रहे हैं या पी रहे हैं, and they are also consuming a lot of animal based product ताकि वो अपनी जिम बॉडी जो हम बोलते बना सके। इन किड्स में पाया गया है दैट द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर शूटिंग अप, बिकॉज जब ये हाई प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी में जाते हैं, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है अच्छे से, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है अच्छे से, इट प्रमोट्स द जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो उसको और बढ़ा देता है, एंड इट इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूटर ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। सो हमारी बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो हम जो खुद बनाते हैं, और एक जो डाइटरी सोर्स से हमें अंदर हमारी बॉडी में जाता है। प्लांट बेस्ड सोर्सेज जो होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, उसमें गुड फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके और इन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं।
whereas वही चीजें जो हमने समझी रिफाइंड फूड्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स में, यही डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होते हैं। सो दो एंट्री पाथवे से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और स्पाइक कर जाते हैं। मूविंग ऑन टू बोन हेल्थ, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमारी बोन हेल्थ जब कॉम्प्रोमाइज होती है, कैल्शियम उससे लीच होता है। तो दिस ऑल्सो, कैल्शियम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मेनी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। सो जब हमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हमारी बॉडी ऑलरेडी कैल्शियम डेफिशिएंसी पे काम कर रही होती है, बोन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में चल रही होती है, डेफिशिएंसी की, या इम्यून सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज होता है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो कैंसर सेल्स को उस टाइम मौका मिल जाता है कि वो प्रोलिफरेट करें, वो उस टाइम जाके हेल्दी सेल्स को अटैक करें, और जो खुद में है वो बढ़ते जाए। इसीलिए हमें हमारी ये चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम हमारी बोन हेल्थ को भी अच्छा रखें, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी चेक में रखें, इम्यून सिस्टम को भी चेक मतलब ऑप्टिमल लेवल में रखें, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी है उनको ओवरकम करें, ताकि हमारी बॉडी उस स्टेट में हो ताकि हम इसको फाइट कर सकें। So, which are the parameters that we can use to monitor our health when we are undergoing health checkups? जो हम खुद से भी थोड़ा सा देख सकते हैं। जब भी आपके डॉक्टर्स आपको टेस्ट करवाने को बोले, तब आप इन 3 पैरामीटर्स पे देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, प्रीकर्सर्स हैं ये, टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी ऑप्टिमल हेल्थ के लेवल पे हैं या नहीं। सो हमारा सीबीसी जो टेस्ट होता है, बेसिक टेस्ट जो ब्लड टेस्ट होता है, दैट टेल्स अस अ लॉट अबाउट दो बेसिक चीजें जो हमें देखनी है उसमें से, दैट इज आर हीमोग्लोबिन लेवल्स। अगर वो अच्छे नहीं है, आयरन लेवल्स आपके हाई या ऑप्टिमल नहीं है, तो वो आपकी बेसिक बॉडी की फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करेगा। एनीमिया आपको हो सकता है, जिसकी वजह से और दूसरे इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज होता है आपका, एंड इट लीड्स टू प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर एज वेल। नेक्स्ट इज आवर ब्लड शुगर लेवल्स। ब्लड शुगर पे हम इसके जस्ट बाद एक सिंपल सा क्विज करेंगे, विच इज इन अ गूगल फॉर्म फॉर्मेट। संगीता जी, if you can share the link in the chat for everyone, we look Yeah, into it. Yeah, I will do that. Shall I yeah. share it right now? You can share it right now. I'll just explain this point, and if everyone wants, they can take the quiz right away after this. Okay. So basically, जब हमारे blood sugar levels high होते हैं, insulin levels basically insulin resistance होता है हमारी body में develop. We are talking about type 2 diabetes, which is very common in today's era, and also it is a lifestyle disorder. It is not a genetic disorder. So जब insulin बन रहा है हमारी body में, पर वो यूज नहीं हो पा रहा है, सो अगेन यहाँ पे हम समझेंगे ग्लूटेन जो हमने बात की थी, व्हीट में से जो ग्लूटेन मिलता है। सो व्हाट दिस ग्लूटेन डज, इट गोज इनटू आवर गट, इट लीचेस आउट फ्रॉम आवर गट, बिकॉज वहां पे जो माइक्रो होल्स रहते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, इट गोज थ्रू दैट इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम, एंड देन इट कम्स एंड बाइंड्स। इंसुलिन बेसिकली उसके रिसेप्टर वाली जगहों पे आके वो बाइंड कर जाता है। सो इंसुलिन बीइंग अ हार्मोन, हॉर्मोन्स का इट इज अ लॉक इन की मैकेनिज्म, जिसमें हॉर्मोन्स आर द की दैट गोज एंड बाइंड्स इनटू द लॉक। सो ये जो इनके रिसेप्टर वाले एरियाज हैं, इन पे जाके ग्लूटेन बाइंड होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। उसकी वजह से ये फ्री इंसुलिन घूमता रहता है बॉडी में और यूज भी नहीं आ पाता है, और उसकी वजह से हमारी शुगर प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो पाती, क्योंकि नाउ दैट द ग्लूटेन इज बाइंडेड और टॉक्सिन्स आर बाइंडेड टू दीज रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स यूजलेस हो जाते हैं, तो साइट्स। सो हर सेल पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स भी रहते हैं, तो वहां पे जाके वो बाइंड अगर नहीं होता है, देन इट बिकम्स, इट रेंडर्स, मतलब वो यूजलेस हो जाते हैं। सो फ्री शुगर्स हमारी बॉडी में घूमती है, जिसकी वजह से हमारे शुगर लेवल्स भी बढ़ती, वो रेगुलेट नहीं हो पाती। So if you guys can take out just 5 minutes to fill out this form that we have shared, a Google form, तो आपको अपने ब्लड शुगर बैलेंस के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। So if you could just share that and share the score with us in the chat section.
Are you all able to access the Google form? We'll wait more for 2-3 minutes, 5 minutes till everyone fills the form and shares their score, right? Okay, we've started getting the scores 2, 3, 8. I think, yeah, we've got scores in all ranges, Rhythm. 1, 6, 3, 2, 8. Yeah, all right. So as we can see, there are a few people above 6, I noticed. One is 8, one is 6. Many of them are around 2, 3, correct? Yes. Okay, okay, okay. So if specifically for the people who must have scored above 6, it means हमारा blood sugar level, it is not balanced. हमें हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं, एंड दैट इज व्हाई अगेन वी आर मोर प्रोन टुवर्ड्स कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में थोड़ा सा प्रोलिफरेट कर रहे हैं, बिकॉज हमें अगर कोई डिजीज नहीं भी है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में है if we have scored more than 6. Okay, so again, all right, have the people 4. Okay, so for the ones who have scored lesser than 6, it is very good. आप सही track पे in terms of managing your blood sugar balance, क्योंकि ये क्रेविंग्स भी जो बॉडी में होती है, फॉर एग्जाम्पल विच वॉज अ बिग फैक्टर. हम समझते हैं कि क्रेविंग्स अगर हमें हो रही है, इट मीन्स हमें लाइकिंग है उस चीज की तरफ. जैसे कई लोग मीठा क्रेव करते हैं, कोई नमकीन क्रेव करता है. ये बॉडी का साइन होता है या इंडिकेटर होता है टुवर्ड्स मेकिंग अस अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी में कोई चीज की कमी है. ये बॉडी का तरीका है बताने का. अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है, ये बॉडी का तरीका है बताने का कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है. अगर आपको बेसिक शुगरी स्वीट्स या इन चीजों की क्रेविंग हो रही है, इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ बॉडी टू टेल यू कि मे बी आपके सेलेनियम या क्रोमियम या बेरिलियम बॉडी में कम होगा, जिसकी वजह से एज वी अंडरस्टूड अर्लियर हमारा ब्लड शुगर लेवल का इम्बैलेंस होता है, तो इट लीड्स टू प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर. कैंसर सेल्स का कहीं ना कहीं लो ग्रेड लेवल पे वो अपने आप बढ़ता जाता है टिल वन डे वो इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल्स पूरे इम्बैलेंस होते हैं, हमारे लिपिड प्रोफाइल एंड अदर मतलब जो भी प्रीकर्सर्स हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की हेल्थ फुली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. एंड देन इट हैपेंस जस्ट लाइक ऑल ऑफ अ सडन. अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड क्रॉनिक इलनेस, क्योंकि इसका प्रोग्रेशन स्लो एंड स्टेडी होता है, पर उसको हम इसीलिए अभी से हम कंट्रोल में ले आएंगे तो हम वहां नहीं पहुंचेंगे. मूविंग ऑन टू द लिपिड प्रोफाइल.
हमारी जो लिपिड प्रोफाइल होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारे हाई रहेंगे, सो उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी होती है, एंड उसकी वजह से कार्सिनोजेंस जो हमारी बॉडी में फ्रीली घूमते हैं उनको फीड करने को भी मिल जाता है उस पे, एंड दैट्स व्हाई कैंसर का प्रोग्रेशन होता है. सो दैट इज व्हाई दीज थ्री थिंग्स आर द वंस. सीबीसी, जिसमें आप हीमोग्लोबिन लेवल्स और आपकी इम्यूनिटी को देखेंगे कि वो इनबैलेंस है या बैलेंस में नहीं है. ब्लड शुगर लेवल्स को आप देखेंगे पोस्ट प्रांडियल एंड फास्टिंग शुगर जो हम लेते हैं उससे, कि वो रेंज में है या नहीं है. लिपिड प्रोफाइल को हम देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल हमारे रेंज में है या नहीं. सो इन तीन चीजों से हमें समझ आ जाएगा कि हमें हमारी बॉडी के किस लेवल पे है. हम अभी ऑप्टिमल लेवल पे हमें जाना है, पर हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम अगर कहीं पहुंचना चाहते हैं तो हम शुरू कहाँ से करें. सो दैट इज हाउ वी कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे. Thank you so much for being curious and learning more about your own health. And specifically, हमारे quiz section में, I was really happy to see that all of you were quite aware. So before coming even to this session, आप बहुत कुछ जानते थे specifically about things. Even mechanism नहीं जानते होंगे तो भी आपको पता था what is the right thing to do in certain things and what is not. So thank you so much, and I think we can proceed with the Q&A session. Yes. Yep. Absolutely. If you can stop sharing. Yeah, I'll stop sharing. Yeah. Thank you. It was an excellent session with them. Extremely informative. Thank you. I hope I was able to deliver. I know time बहुत कम था. There are so many things to cover, things to tell about, but we tried keeping and delivering as much as possible into it. And सब वो चीज ले जा पाए आज अपने साथ और उस चीज को अप्लाई कर पाए. मेन हमारा गोल बस यही है. Right. Thank No, you. absolutely. Extremely informative. A lot of things that we need to know, but unfortunately, it's not known to us. So from that perspective, it was really helpful. Okay. Now we'll take few questions and maybe few comments that have come on chat. So I will read out those. And आप में से किसी को भी यदि कुछ और पूछना है, कुछ question देना है, तो please post कीजिए. So okay, there was this question आपने answer तो किया था Rhythm, but I'll still ask again. Does microwave cooking lead to cancer? It actually does, because microwave, when it comes, अभी आप recent studies जाके भी अगर refer करें, so microwave से जब heat जो generate होती है, again high temperature वाली heat generate होती है, and it goes into our food. So जब ये food को हम ingest करते हैं, it acts as a carcinogen in our body, जिसकी वजह से cancer cells का growth promote होता है. So using a microwave for heating is a total no. Specifically the cancer patients that we have, उनका सबसे पहले हम ये चीज बंद करवाते हैं कि फर्स्ट फूड को रीहीट बार बार करना बंद करना, एंड सेकंड बिकॉज हम रीहीटिंग के लिए माइक्रोवेव हैज बिकम लाइक अ सेकंड हैंड फॉर अस. हर चीज में हमें हीट करना है तो माइक्रोवेव हमें मतलब वी यूज दैट, तो वो हमें बंद कर देना है यूज करना. Okay, thank you. So अगला question है Dr. Ramesh Sarkaria, and he's suffering from recurrent HNCC pain. So he's asking what dietary changes should he do, and he's on semi-liquid diet. Okay, I think I'll be able to answer him better on a one-on-one call, because उसमें सिर्फ एक दो factors नहीं होते हैं. There are many other parameters and factors that we need to look into. We would be requiring his more in-depth history, information and everything, and then उसका root cause हम find करेंगे, and then we'll be able to make him understand better in terms of how to improve it through dietary interventions. Because there is no one single plan for everyone. It is very individualized. Yes, yes. No, absolutely. And I'm sure people understand. So Dr. Ramesh, if you're still there on the session, then we've also given Rhythm's number. You can take a note of that and you can reach out to her. I think someone asked about acholysis spondylitis, correct? Yeah, and I am just going through all from the beginning just to make sure we don't miss any. There was this question from Priyanka Nagda on can you brief about gut health, which I think you had talked about it. So I think Ishad usse pehle aaya tha, so maybe we can skip that. Chetna ji ka question tha, what food includes B2? Sorry, I didn't get you.
what food includes B2? Not B12, but B2. I don't know which Okay, one. okay. So B2 we don't specifically require B2 and एक food में एक चीज नहीं होती है, rich sources होते हैं, but at the same time अगर हम विटामिन बी पे प्रोफाइल पे कंसंट्रेट करें, which includes B1, B2, B12, B6, all the Bs. So sprouts जो होते हैं, fermented foods, but also sprouts, overnight जो हम sprouting करते हैं, those are really rich in these vitamin Bs. जो हम बोलते हैं. So that is one of the things that you can start including in your diet, so that आपकी बॉडी में जितने भी विटामिन बी डिफरेंट प्रोफाइल्स की रिक्वायरमेंट हो, that can get like accommodated. Got it. Thank you. Then there was this question, I think when you discussed about coffee, what about chicory powder? Is it good to have? And what about coconut sugar, palm sugar, khansari sugar, and brown sugar, etc.? Okay. So first question was, you said instead of coffee we are to have, I didn't catch you, sorry. Chicory powder, chicory. Chicory powder. Yeah. Chicory powder is also a good alternative. Chicory powder can be used, but again, when we do use it, we need to use it very mindfully. Chicory is generally, it gives that texture, but वही चीज आपको legume जो हम white peas बता रहे हैं उससे भी मिल जाएगा. So again, both are a good alternative, but a healthier one than chicory powder, we would say, is the white watana wala, white peas wala option. Both are still good. They are much better than coffee, roasted coffee, because उसमें caffeine होता है. But chicory powder is being used these days, and it helps in counteracting many other healthy, मतलब उसके health के और benefits भी होते हैं, not just this one single one. Got it. Next was sugar one, you said. Yeah. So what about coconut sugar, again, कभी भी हम कोई चीज को sugar के respect में लेंगे. So for example, if we are jaggery, कोई भी sugar cane अगर हम समझे, sugar cane जो पेड़ है उससे jaggery पहले बनता है, and then it leads to making of रिफाइंड शुगर जो व्हाइट शुगर हम कंज्यूम करते हैं. सो कोई भी चीज का जितना हम प्रोसेसिंग बढ़ाते हैं उतना उसका ग्लूकोज लेवल जो बॉडी में जाके ग्लूकोज रिलीज होता है वो बढ़ जाता है. सो वी वुड से रादर कंज्यूम, जैसे पाम जैगरी है या इस टाइप की जैगरीज, आप जैगरी फॉर्म में चीजें कंज्यूम करें. कोकोनट जैगरी भी आती है. सो इंस्टेड ऑफ कोकोनट शुगर, प्रेफर कोकोनट जैगरी, because that is a lesser refined version of the same, and that is much safer to use. Can soy milk be used for tea, coffee? Yes, very easily it can be used. Actually, amongst all the plant-based milks, soy milk is the only one जिसको हम heat करके boil तक ला सकते हैं. वो फटता नहीं है. उसका characteristic and even the nutritive profile is very similar or very close to what we consume as animal-based milk जो हम consume करते हैं. So it is very easily blend हो जाता है. Just make sure आप store bought वाला soy milk ना लाएं, because again उसमें पैक में लेबल जो आप पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है जो हमने समझा अभी, उसमें बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स, emulsifiers and all these chemicals are there which are not good for your body. So if you're making it at home, we can share you the recipe in the group. I think संगीता जी हम कर पाएंगे उसका share, how to make it at home. It would be very easy for everyone to try and test it at home. And उसमें जब हम घर पे बनाते हैं तो soy का flavor भी नहीं आता है because of a single step of removing its skin. So we will explain you that in the whole method of making it. Thanks. What about air fryers? You talked about microwave. Yeah, air fryer is again a no-no, because air fryer का जो base होता है, हम देखें जो जिसपे food हमारा रखता है वो aluminium का होता है. So because of that, it is very harmful for our body, because वही aluminium then leach out करके it is carcinogenic for our body. So it leaches out into that and reaches our body. That is why air fryer is also air fryer का अगर आपको better option चाहिए, that is OTG, which is still OTG is a healthier option against microwave and air fryers as well. और उसमें आप air fryer का जो main motive है, that is frying things or like baking things, basically चीजों को आप cook कर रहे हैं without putting or using a lot of oil. You can do the same when you're baking stuff.
आप वही चीजों को जब बेक करते हैं, आप टिक्कीज को बेक कर सकते हैं, वो हेल्दियर वर्जन है इंस्टेड ऑफ फ्राइंग दोस. Uh, then the next one, can soaking beans and legumes to reduce phytate level help reduce free radical reactions? Soaking beans for Yeah. बेसिकली सोकिंग से जो सोकिंग का जो मैकेनिज्म है, व्हाई डू वी सोक थिंग्स, क्योंकि उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. उस चीज को हमें निकालने के लिए हम सोकिंग करते हैं, जैसे लेग्यूम्स को, ग्रेन्स को या नट्स एंड सीड्स को, सो दैट जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो हमें इजीली रेडीली अवेलेबल हो जाए. बट एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फ्री रेडिकल को लेके जाते हैं, दोज आर नॉट रेडीली फाउंड इन दोज थिंग्स जब हम उसको सोक करते हैं, बट इट इज मोर सो उसका मेन सोर्स हम बोले तो वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, रादर देन ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड ऑल दीज थिंग्स. Okay. Yeah. The next question is, this is on ankylosing spondylitis. What precautions we have to do if suffering from ankylosing spondylitis? So when it comes to ankylosing spondylitis, उसमें generally it is to do with again your bone health, आपकी muscle की health and also आपकी body में जो hormonal balance है. So dietary changes जो हम करते हैं, first switch जो मैं आपको basic switch रहेगा, that is switching to a whole food plant based diet. Processed food आपकी body से सारे निकाल दीजिए, मतलब आपकी lifestyle से, आपकी diet से. And second चीज, ये जो आपको हुआ है, जो भी कंडीशन हमें होती है, उसका रूट कॉज जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उससे हमें समझ आता है कि हाउ डू वी वर्क ऑन द सेम. सो बेसिक थिंग दैट वी नीड टू मूव टुवर्ड्स इज अ होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट. प्लांट बेस्ड डाइट में भी हम होल फूड वाले पे जाएं, जहाँ पे प्रोसेस्ड और रिफाइंड चीजें हम नहीं कंज्यूम करें. सो आवर बॉडी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स टॉक्सिन रिमूवल करना चालू कर देगी. बोन की हेल्थ बेटर हो जाएगी, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स इजीली एब्जॉर्ब होंगे, एंड गट की हेल्थ से भी इसका कोरिलेशन होता है. एंड अगेन आपके स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, वो मैनेज आप कैसे कर रहे हैं, उसका भी बड़ा रोल होता है. सो इफ आई कैन गेट अ डिटेल्ड आई थिंक case history and everything, I can tell her much better on the same, on the Absolutely. individual But case. if you can reach out to Rhythm if you would like to, we've given her Yes. number. Okay, there's one more question. Does rock salt, totally replaced by normal salt, will take care of all the minerals, especially It can, iodine? yes, it can be. What about iodine? Until, sorry, What about iodine? iodine. We Yeah. do get iodine in these things. It's not like वो होता नहीं है. Okay, basically it's a basic, but we have forgotten history. जो टाटा नमक हम अभी खाते हैं, द टेबल सॉल्ट दैट वी कंज्यूम, आयोडाइज सॉल्ट, वो इसलिए बना था क्योंकि जहाँ पे हिमालयन रेंजेस है, जहाँ पे माउंटेन में हम रहते हैं, माउंटेन्स में ये होता है कि व्हेन इट रेन्स, आयोडीन लीच आउट कर जाता है फ्रॉम द सॉइल. उसकी वजह से वहां पे लोगों को ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती थी, जहाँ पे आयोडीन उनको कम मिलता था डाइट में, एंड गोइटर का प्रॉब्लम या थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत होते थे. बट इट बिकेम कमर्शियलाइज्ड. Now where we are living right now, we do get iodine not just from the salt, but we get it from other things like fruits, vegetables, whatever grows from the soil. Trace mineral है, वो हमें मिल जाता है. So इतने अमाउंट में हमें आयोडीन और सोडियम दोनों की जरूरत नहीं है जितना हमें टेबल सॉल्ट से मिलती है. वो उसकी जगह, वो जितना बेनिफिट उसको देना चाहिए था, उसकी जगह वो हमें हार्म करता है बाय इंक्रीजिंग आवर बेसिकली आवर ब्लड बीपी, ब्लड प्रेशर हमारा. So it makes us hypertensive. Got it. Sure. Okay. Next question. Can we use hemadilium instead of aluminium? I don't know what is hemadilium, if you know it. I have not heard of it. Can you spell it out maybe? HIMADALIUM. I have not heard of it, but I'll definitely look into it and get back. Whoever asked this question. Okay. There's some question from Dilip Verma ji, and I think, it's very specific to his health, and he had a type of cancer. So Dilip ji, if you're still there on the call, I would request you to get in touch with Rhythm and directly, you can ask you can share all the details, and then maybe she'll be able to provide. I think you answered this question, but maybe I'll read it out again. Is excess protein also harmful?
Yes, excess protein, but in the form of animal protein. Plant based proteins हम excess actually कभी खा नहीं पाएंगे, because जब भी plant based कोई भी nutrients हमारी body में excess हो जाता है, first उसमें fiber रहता है. It is rich in fiber. So whenever उसका जो प्रोफाइल में जो चीजें रिलीज होती है, it releases very efficiently, and body को टाइम मिलता है उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करने का, प्रोसेस करने का, डाइजेस्ट करने का. सो कभी भी एक्सेस आप कितना भी खा लें, आप खा के भी आई थिंक 3 बार से या 4 बार से ज्यादा लेग्यूम्स तो नहीं खा पाएंगे, विच इज अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्लांट बेस्ड होल फूड प्लांट बेस्ड प्रोटीन. बिकॉज वेन यू ईट इट यू स्टार्ट फीलिंग फुल, जो कि आप नॉर्मल दूध पियेंगे या फिर वे प्रोटीन भी खाएंगे, उसमें आपको इतना जल्दी फुल उस टाइम के लिए फील होता है, बट देन यू स्टार्ट क्रेविंग इट. वो क्रेविंग आपको नहीं होती है व्हेन यू आर कंज्यूमिंग होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, बिकॉज उसमें लेग्यूम्स में फाइबर भी आ गया, आपको प्रोटीन भी मिल गया, ऑल दोज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स भी आपको मिल जाते हैं. सो बॉडी स्टेबली उस चीज को डाइजेस्ट एब्जॉर्ब करता है. Right. Sure. Now, Achatus, the next question is, are there any preventive tests which can help screening cancer at earlier stage? Basically, these are advised by the doctors. Yearly, आपके जो हमने basic test अभी 3 discuss किए, that is very important to understand कि आपकी body ठीक है या नहीं in terms of optimal health. But अगर ये चीजें आपकी ठीक नहीं होती है, so when you go to a doctor, they advise you certain tests. Like after the age of 50, generally females को बोला जाता है to get their screening done for breast cancer every year. So every year health checkups, even when you're at a young age, is something whole body checkup जो हम बोलते हैं, जिसमें हमारे B12, D3 levels, हमारी basic CBC test होता है, our liver profile is done, our thyroid profile is done. These are good to know अगर आपके ये 3 चीजों में imbalance है तो. CBC, lipid profile and आपका blood sugar levels imbalance है, क्योंकि ये चीजें imbalance रहेगी तो आपकी दूसरी चीजें, दूसरे organs भी imbalance होंगे. So I would request, if these 3 things are imbalanced, I would suggest you go forward for a whole body checkup at least once a year. Even if you're young, that's okay. It's good to know what are we having, what's going on inside our body. Okay. Can you throw some light on fasting? The benefits of fasting, maybe that's what you mean. Okay, so the relation of fasting with cancer development is very strong, and it is being recognized. Culturally, it was very important and it is ingrained in all the religions, but uska scientific significance is coming to light now. फास्टिंग में ये होता है, बेसिकली आप ग्लूकोज, रेडीली अवेलेबल ग्लूकोज आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है, इसीलिए कैंसर सेल्स जो है वो डेड होना चालू कर जाते हैं, बिकॉज उनको उनका बेसिक सोर्स इज ग्लूकोजन, इजीली रेडीली अवेलेबल ग्लूकोज, जो कि नहीं मिल रहा है. तो इसीलिए हेल्दी सेल्स आर एबल टू एक्सट्रैक्ट ग्लूकोज, वो निकाल पाते हैं फ्रॉम द फैट डिपोजिशंस इन आवर बॉडी, बट वही चीज कैंसर सेल्स नहीं कर पाते. तो इसीलिए कैंसर के सेल्स को किल करने में फास्टिंग हेल्प्स. इसीलिए एवरी मंथ इफ वी कैन डू इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग, हम पूरे महीने करें या हफ्ते में 3-4 दिन भी करें, इट हेल्प्स अ लॉट. एंड इफ यू कैन डू अ वाटर फास्ट, उससे बेटर कुछ भी नहीं है. वंस अ मंथ और मे बी 2 months में एक बार भी आप करें, आपकी बॉडी में सारे टॉक्सिन्स जो है वो क्लीन हो जाते हैं, इट गेट्स किक्ड आउट. बिकॉज फर्स्ट अगेन डाइजेशन जो हमारी सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एनर्जी ले लेती है, बॉडी को रिपेयरिंग का टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है, एनर्जी बहुत ज्यादा मिल जाती है. Yeah, no, absolutely. I think fasting is so beneficial. We forgot its importance over the time. Yes. I mean, as you said, ना ये हमारे कल्चर में है, बट हम भूल गए कि क्यों है हमारे कल्चर में. ये भी भूल चुके हैं, इट्स अ स्मॉल थिंग, बट हम ये भूल चुके हैं कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम मेडिसिन भी खाते हैं, मेडिसिन और फूड अपना काम नहीं करती, बॉडी अपना काम करता है. सो वी आर फॉरगेटिंग द पावर ऑफ आवर बॉडी, जिसको हम ये जितने भी इंटरवेंशन हमने बात की, दीज आर जस्ट द कैटलिस्ट. काम हमारी बॉडी को ही करना है. सो वो बॉडी अपने अच्छे लेवल पे, ऑप्टिमल हेल्थ पे पहुंचे, ये सारे सिर्फ कैटलिस्ट है. Absolutely. Is stevia, I think this is that sugar-free alternative, right? Yes. Yeah, is that good? We don't suggest stevia because it is still under, though it is being considered as a
good replacement in the commercial industry, but उसकी जगह हम monk fruit ज़्यादा बोलते हैं, because monk fruit is again a much natural version. Stevia में stevia leaves से उस चीज को extract किया गया, whereas monk fruit is naturally sugar free, उसमें calories नहीं होती है, and it's naturally मतलब sugary, या फिर हम बोल सकते हैं sweet होता है, yeah. So उसका पाउडर्ड वर्जन आप स्टिल ले सकते हैं monk fruit का, या monk fruit आपके कुकिंग में यूज कर लीजिए when you are making some sweets or something, आप उसको यूज कर सकते हैं rather than stevia. Okay. Okay. Can you please suggest dishwashing name? I just know Vim. So now we can talk about bio. Yeah, I know. I think. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yes. So I mean, yes, लोग ज्यादातर विम या उसके जो भी सिमिलर जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो यूज करते हैं. See, the other alternatives that we have is, bioenzyme, which is nothing but essentially fermentation of lemon peels या कोई भी citrus fruit का यदि आप पी ले लो, ऑरेंज या मौसम्बी या किसी का भी पील, और उसे उसको फर्मेंटेशन के लिए यू नीड टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ जैगरी, तो ताकि वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस थोड़ा फास्टर हो जाता है, एंड देन वाटर, एंड इट टेक्स अबाउट 2 to 3 months, तो फिर आपका वो एक बायोएंजाइम का सेट रेडी हो जाता है, which can be used for cleaning, whether it is dish or bathroom or floor cleaning, etc. हम लोग, I mean, we are planning to hold a session on that, कि वो कैसे बनाया जा सकता है, उसकी क्या proportion है, कितना टाइम लगता है, what are the pitfalls, etc. So we will get somebody who is into all of this and who makes this on a day-to-day basis. So we will get someone to talk about it more. Perfect. On this, I would just like to add one thing. Recent study एक हुई थी जिसमें they tested a lot of individuals and found उनके सबके घरों में विम या उस टाइप के detergents use होते थे to wash the utensils. So what they found was approximately 20 grams of this detergent or cleaning agent is found in our body through the year. So now that we see ये leach out करके, no matter how much we rub it, wash it and everything, these chemicals end up हमारी body में आ ही जाते हैं and then acts as a carcinogen. Yeah. I think, see, the other alternative that we used to have was rak. Yes, rak. Yes. Yeah. Correct. I mean, these days it's very difficult to source that, and even if we source it, it's very difficult to kind of manage it in the current lifestyle, जहाँ kitchen में sink में wash किया जाता है वगैरह. Correct. Yeah. Okay. What about almond milk? Is that good? Is that a good alternative? Almond milk made at home is really good. आपको उसमें कुछ नहीं करना. Again, we'll share the recipe. But एक basic recipe अगर आपको उसकी घर पे बनानी है, take just 10 almonds. It should be soaked. आप dry, मतलब जो almond है जो dry है, unsoaked वाले उसका आप नहीं बना सकते. उसमें anti nutrients आ जाएंगे. So if you soak them overnight and just blend it with a bit of water, it is very healthy for your body. Specifically when you take it in the morning. जब आपका बॉडी का गट का एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी अपने पीक लेवल पे होता है. Okay, next question. One of your slides had a picture of pickles. Are pickles also carcinogenic? And then we didn't have as such any picture of pickle particularly. But okay, otherwise, I mean, what would you say about pickles? Are they pickles are actually pickles when consumed in actually lesser quantity, not that you're eating it every day, and oil based pickles जो हम commercially देखते हैं उसमें preservatives और सब कुछ होते हैं, so not those definitely, but the ones we make at home traditionally, those are very good because those are fermented foods. जैसे हम आजकल केफीर and kombucha और ये सब सुन रहे हैं जो बाहर के fermented foods हैं which are good for health. Similar way में pickles India के traditional foods हैं, fermented food which was supposed to provide those B12 levels and increase our levels, B complex levels basically, जो हमें fermented food से मिलता है, but should be taken in a lower quantity and not the oil based ones. अगर आपके घर पे pickle है, घर पे बनाया हुआ, I would suggest don't consume it with the oil. Remove the oil and consume. Yeah. Next question, which is also my question, is tea also carcinogenic? Tea. Yeah. Yes, tea, coffee, any kind of stimulant acts as a carcinogen in our body. So tea, when जो हम consume करते हैं, it is many times just tea dust.
अगर आप कोई टी मेकिंग फैक्ट्री भी विजिट करेंगे, they'll tell you very clearly the tea we receive these days, high quality जो टी होती है that is imported outside, and जो इंडिया में हमें इंडियन मार्केट्स में मिलती है that's just tea dust, जिसमें बहुत सारे टॉक्सिन आ जाते हैं। एंड उसकी वजह से टी का जो एक्चुअल यूज है, टी लीव्स का जो मेडिसिनल यूज है वो खत्म हो जाता है। So it is just acting as a stimulator in our everyday life and not giving us a lot of natural benefits. उसकी जगह जैसे there are many other tea alternatives these days like chamomile tea, hibiscus tea, जिसमें इन्हीं के leaves को dry करा जाता है, सिर्फ roast नहीं करा जाता है, and then you just make a tea out. Got it. Yes. So then I think you answered how to wash fruits and veggies. So then would you advise rock or pink salt for those with high potassium or some kidney disorders? Is it better to take plain salt in such situations? So pink salt, sea salt, rock salt, any of these can be consumed. इसमें कोई ऊपर नीचे हम नहीं बोलेंगे कि है. But for example, for a person who has low blood pressure in general, so उसमें sea salt में ज़्यादा minerals मिलते हैं. So उस केस में जब किसी को लो ब्लड प्रेशर का ज्यादा इशू रहता है, that is when we suggest कि आप उस टाइम के लिए till your blood pressure comes to regulated level, तब हम उन्हें sea salt उस टाइम के लिए recommend करते हैं. Sorry, the point was not blood pressure, with high potassium or some kidney High disorder. potassium. Okay, sorry. So you're asking me to compare these three amongst Yeah. किसमें high potassium levels होते हैं. Yeah, somebody who has high potassium or kidney Potassium disorder. levels. Okay, Yeah. okay. Someone who has high potassium levels, actually तो salt का consumption उनको कम ही बोला जाता है, because कई चीजों में हमारे naturally भी salt present होती है कई foods में. So it's not just that you are getting these potassium levels. It is also, for example, potassium rich coconut water भी होता है. So sodium, potassium ये सब चीजें उसमें भी होती है. Electrolytes बोलते हैं इनको. So these are also present in those different food elements too. So इसमें it depends on आपको जो प्रॉब्लम है वो किस लेवल की है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितना अमाउंट देना चाहिए और कौन सा वाला देना चाहिए. So again, I would request if you have a high मतलब मेडिकल इशू आपका बहुत ज्यादा सीवियर है, सो सॉल्ट जनरली बहुत कम देते हैं, एंड पिंक हिमालयन सॉल्ट इज गुड टू यूज. सी सॉल्ट थोड़ा सा आप उस टाइम के लिए बंद करें, but pink Himalayan salt is good to use, or rock salt is also good to use for that time being. But again, we'll have to go deeper into the case. Okay, I think yeah, there are just few more questions. Maybe we'll finish those since we have come thus far. Can we have A2 milk? No, again, A2 milk is no matter it is from an A2 cow, but it is still containing the casein, which is also acting. Casein protein जो होता है, जब यही protein हमारी body में आता है, it acts as a carcinogen. So cow's milk in general, A2 milk भी आप पिए, but these things are not made or tailored for human body's consumption and absorption. बहुत सारे पेशेंट्स में हम जानते भी नहीं है, बट पॉपुलेशन में से 65 to 80% of people are actually not able to digest these proteins which we find in the cow's milk. उसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है. और हम दूध पीते क्यों हैं? We drink it just not for protein, but our first source is calcium. हम कैल्शियम के लिए दूध पीते हैं, which is why we say we drink milk, which is highly available in खसखस and other plant-based products too. और वो absorb अच्छे से होते हैं, digest अच्छे से होते हैं, जो कि cows milk और animal based products से ना proper absorption हो पाता है उस चीज का, क्योंकि first to digest that calcium is leached out from our bones to उसका मेटाबॉलिज्म क्रिएट करने के लिए, उसके डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में से लीच आउट होता है, सो वो रिप्लेनिश भी नहीं हो पाता है अच्छे से. So yes, it is not a good thing to have. And also ghee of the same, we would not suggest that for specifically for cancer patients and for cancer progression. अगर आपका हो रहा है, then definitely we have to stop this. Okay. So I think with this, we have taken all the questions, and maybe we can move towards wrapping up this session.
Thank you, Rhythmji. I think it was an extremely informative session. You enlightened us, I would say, on a lot of different things. I mean, जैसा कि आपने बताया, बहुत सारे लोगों को जानकारी थी, बट ये क्या होता है ना, वेल हमें पता है कि इसमें नहीं खाना है, दिस नॉन स्टिक कुकवेयर में खाना नहीं बनाना है, बट क्यों नहीं बनाना है? वो ऐसा लगता है ना, बहुत सारी चीजें हियर से हैं, पीपल आर टेलिंग अस वी नो, बट देन समबडी, आई मीन बिकॉज समवन सेज दिस, समबडी एल्स सेज समथिंग एल्स, सो आपको वो पता ही नहीं रहता है कि साइंटिफिकली क्या सही है। एंड आपने वो बहुत सारी चीजें हमारे लिए क्लियर की। You explained to us what are those carcinogens, whether it is coming through food or through our environment, etc. All the different factors that are coming, that are impacting us, whether we're absorbing it through our skin or inhaling it or actually directly consuming them, etc. So आपने बहुत अच्छी तरह से वो सारी चीजें बताई, and then you took us towards that, okay, how we can avoid, eliminate them, and what are those alternatives. So whether it is healthy food swaps or whether it is household item and the other lifestyle changes that we should be doing. So uh, all in all, for me personally, though I have been in touch with you, for quite some time, for many months now, it was still a lot of new learnings today. और I'm sure हमारे ऑडियंस के लिए भी आज बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली, एंड हमें भी एक्चुअली ऑडियंस से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आस्क्ड अस, और उन्होंने जो टिप्स शेयर की, जो encouragement हमें दिया, lot of people really liked your session. People have said, can we have a follow-on session specifically focused on Q&As? So we will definitely plan for that at some time. And I have shared the number of Rhythm. Feel free to get in touch with her. I've been in touch with her for last several months now. She is extremely knowledgeable because, see, I mean, the difference, that I have noticed is she's not just done a course, but actually she has studied food science through her graduation, through her master's at Cardiff, and that's something that comes out every time that I interact with her. And I'm sure, I mean, as you reach out to her, you would also benefit from that. And the most important, I feel, there is a solution. We can prevent a whole lot of these lifestyle diseases. And I mean, if you look at it, most of the biggest killers in India are all lifestyle diseases. So the number one, whether it is heart attack, number two, which is cancer, or some of the other lifestyle diseases, diabetic, etc. All of these can be prevented through simple changes in our lifestyle, provided we know it. So that information is available. We'll try and do whatever we can, spread that information, and please reach out also. And any suggestions that you have on our sessions, please do share. Happy to accommodate. Yes, thank you so we much. will be sharing the recipe of soya bean milk. We will be also sharing the recordings of the session on our group. I did share the link of our group. In case you have not joined, please do join, but it will be shared across different channels. So I'm sure you'll get access to it. There is a YouTube channel by name Go Conserve. You can look for that. You can subscribe to that, and you will also get the link of this session, our past sessions, as well as our future sessions. So with that, I would like to conclude today's session. Thank you, everyone. Thank you for your time. I know we exceeded the time, but मुझे लगा सबके लिए beneficial है, तो continue करते हैं. Rhythm, I think her screen is frozen. Thank you. Thanks, everyone. Have a nice day and have a nice weekend.